So many things we can talk, and I will talk. There will be pause, there will be break for the bathroom, break for the lunch, break for the illegal activities, and break for the legal activities. I was just somebody asked me, one of my good friend, he always consider me as a first to go person whenever the question does not involve how to make more money. So he was asking me, he asked me some question today in the morning regarding why Kapil Dev was not invited or why Kapil Dev complained. And I explained to him, and he shot back the message saying that, how do you know so much thing? It's amazing. I salute you. And I told him that, listen, I religiously read a very renowned and stable newspaper in the US every day. I also read one, whatever is stable and whatever is renowned and whatever is creditable from India. I always read Dawn, which is a Pakistani newspaper website. And after reading all these three, if I feel that I need to cross check something, because there are claims and there are adjustments and there are statements and there are lies and there are facts which are turned into lies and the lies turn into fact. For me, at my individual level, I will cross check with BBC. Very long time before, probably during Iraq war. After that, for a few years, I was also checking Al Jazeera, is a website, news website. You know, in those days when I was young, I thought that Al Jazeera is a very balanced news giver, but I don't consider it anymore. But I told my friend that I check all these things, and my worst trait is I will not forget something that I don't want to forget, and I will not remember something that I don't want to be remembered. Now, the not to forget and not to remember facts. Absolutely, I have the discretion. If somebody tells me how much money our dress cost, or if somebody tells me something which is not in my, so if I consider it very important. So if I see a news item where it says cross, if I say something about Indira Gandhi, or if I say something about uh, Khrushchev, or if I say something about Pervez Musharraf, I'm just giving you the example. My final answer to that is what to remember and what to forget is my discretion. It can change
Nobody can tell me why I remember this and why I did not remember that. Uh, Most of the time, I remember it, but I don't talk about it. If I feel that now whatever I'm saying doesn't make any sense because there is something else happened. But I'm not going to say that I agree to the other things also. The instantaneous reason that I decided, I haven't even have my uh, dinner yet. And the instantaneous reason that I decided before I forget, because I am also a human being, is I am not in favor of Hindus, I am not in favor of Muslims, I am not in favor of Jews, Christians, America, Russia, anything. I am only, I take each and every incident on its merit and then I will give my opinion. I may not be right all the time and I don't care, and I may not be wrong all the time and I don't care. I don't have any drive through readers. I don't want any drive through readers. I know anything what I say is not going to have any political implications. I know that I am not a rich man. I know that anything I say can be proved wrong by money force or by power. But no negotiation with the terrorist. Israel will not stop the war until unconditional release of all the hostages. Unconditional release of all the hostages. This is the Prime Minister of Israel. I have so many great Jewish friends. I love them all. I have very few. I can count on 1, 2, 3, 4, 5. Hmm. Okay. I can count 1, 2, 3, 4, 5, and probably one or two are already dead. I have zero reliable Hindu friend. Zero. Even the Maharashtra Mother Chod. Reliable? Cross. Jute? Yes. Lobby? Yes. Corrupt? Yes. Israel will not stop the war until unconditional release. I am only coming when I see the news item flashed on my laptop that there is a deal reached. First of all, a deal means there is something give and taken has happened. So it is not unconditional. And I have a very low opinion about this Prime Minister. I won't even discount the possibility that he is in such a political trouble at home with corruption and all this bad stories about him, and it could be correct.
that he might have even instigated and planned the attack on Israel. A very, very bold statement. And then this whole thing of telling for 30 days or 40 days unconditional release, part of the plan that you come, boom, you do this, boom, we come, we do this, boom, planned, targeted, calculated in advance. And then we make a deal. After the deal, I will be absolved of all the charges in corruption. And I can continue as a Prime Minister of Israel for probably another 4-6 years. Maybe win one more election. And but I'm not, I'm simply disappointed. I wanted, when he said unconditional release of all the hostages, you can go back to his speeches unless CNN or the world media or the Israel media himself or themselves have edited it to. But in my memory, the statement was no pause in our attack until unconditional, this is the term, very important, unconditional release of all the hostages. So unconditional and all. Very gravitational force here. Whatever I am hearing now through the media that guarantees that it is true. Deal. I'm not going to go into the deal. I'm not going to stoop that low. The deals are the deals. The deals are only between the Bhadwa and the Randi. The deals are only between the politician and the politician. Deals are only between country and country. Deals are never between a brave and a brave. Deals are never between a truth and a truth. In a truth and a truth, there is no deal required because truth recognizes what is truth. The deal is only between truth and a liar. I can go on and on this subject. I think this notion which has been generated by Netanyahu and Pegu together. India has a very unbelievable longer history than probably the Christianity and the Judaism and the Islam. We have seen everything. We Hindus have seen everything. We sympathize with the Jewish community because the Jews are not the enemies of the Hindu. They are friends. But it does not mean that you override the justice system, the right and the wrong, just because of the emotionalism, religionalism, region, not region, religionalism. I have
There is so many good examples from the Indian history, from the Ved, Upanishad, Manusmriti period and beyond to Narendra Modi period, the FACU period. At no place, because there is a time period, there is a line. In the line, it was like before that, there were no Muslims. But before that, in the no Muslim period, was there any agreement or disagreement or fight of philosophy, thinking? And after the Muslims came in India, one thing is certain. I'm going to take a break after this statement. One thing is certain, that India, Indian subcontinent, I'm not going to go into the size of their subcontinent, borders and which countries were there or which countries were not there considered as Indian subcontinent, because the earth plates have been moving. But there was a time, there was a place which had a name, and I'm not sure whether it is the Hindustan. Hindustan is actually a very recent abbreviation of whatever in those days we used to call it. It is not even Arya Vrat, because Aryans are foreigners. They came from. So there is a name of that land which talked about Manusmriti, Upanishad and Ved, and many more. Shankar Bhagwan, maybe Mahadev ji. But Mahadev ji, if somebody asked and if somebody answered that Mahadev ji is भारत वाला तेरी माँ का भोसड़ा बहनचोद, भारत की माँ चोदता है, भारत तो था ही नहीं वहाँ, इंडिया भी नहीं था, हिंदुस्तान भी नहीं था, मुस्लिम वो लैंड का नाम किसी को पता नहीं. I can only go to one extent that maybe Haridwar, but I'm not going to waste my time. I'm only going to say that एक लाइन जो था ना उसके पहले, मुस्लिम का एम आने के पहले भी भारत में, इंडिया में, आई एम सॉरी, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है वो एरिया का नाम क्या है. कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं था. कार्तिकेय और गणेश दोनों शंकर के बच्चे थे. वो दो के बीच में कुछ एक इंटेलेक्चुअल डिफरेंस ये है कि किसी ने बोला दो में से एक ने, मेरे को याद नहीं है, कि दुनिया को घूमना है. एक ने पूरा शंकर और पार्वती के आजू बाजू घूम लिया और बोला मैंने खत्म हो गया मेरा दुनिया. आई एम नॉट गोइंग इनटू इट. मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान का नाम भी नहीं आया था, पाँव भी नहीं रखे थे, तब भी था. तो उसके बाद में मुस्लिम्स आए, बहुत आए, लेकिन एक रिकॉर्ड
देखा जाए, मेरे को अब इसमें भी नाउ दैट समथिंग विच आई एम नॉट अवेयर ऑफ, कि कितने मुस्लिम वापस गए हिंदुस्तान को छोड़ के इंडिया को। लौड़ा लहसुन क्या नाम था उसका मेरे को मालूम नहीं, रोहित शर्मा नाम था उसका, या फेकू नाम था उसका, फेकुस्तान, पाकिस्तान। कोई मुसलमान मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वापस जहां से आया वो वहां गया, क्योंकि एक भी हिंदू, एक भी राजा, एक भी लवड़ा लहसुन प्राइम मिनिस्टर सेनापति लवड़ा भंचो जो भी नाम है, हम लोग किसी को हरा नहीं सके, भगा नहीं सके। शायद हरा दिया होगा लेकिन भगा नहीं सके, क्योंकि वो हारने के बाद भी रह गया। ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, मैं पॉज करता हूँ वीडियो। हैड a very nice डिनर, और उस टाइम पे मेरे को एक सवाल पूछा गया। मैं तो अभी बच्चा पैदा, मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक सवाल पूछा गया कि आज अगर कोई मुंबई में या अहमदाबाद में या दिल्ली में यंग कपल चोद रहा है, और चोदते टाइम औरत या मर्द, लड़का या लड़की, लौड़ा या चूत, एक दूसरे से पूछे और दोनों ने कॉन्डम नहीं लगाया है, तो दोनों एक दूसरे को पूछ रहे हैं कि बच्चा होगा तो तुम वो बच्चे को क्या बनना चाहते हो, वो क्या बनना चाहिए। दोनों के पास कोई ऑप्शन रखे जाते हैं कि एक फेंकू, कि आदमी अपनी औरत को बोलता है चोदने के टाइम पे कि मैं जो बच्चा होगा आज मैं चोदूंगा तेरे को। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं चोदने के बाद तू प्रेग्नेंट होएगी और लीगल बच्चा पैदा होगा हमारे बीच में। उसका नाम से मुझे को मतलब नहीं है, लेकिन वो होगा कौन, किसके जैसा होना चाहिए। तो आदमी बोलता है कि मेरा वो, मेरे लंड का जो रिजल्ट है तेरी चूत में जाने के बाद, और जो बाहर निकलता है वो फेंकू होना चाहिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये स्टोरी मैं यहाँ से चालू करता हूँ। तो किसी ने बताया मेरे को फेंकू चाहिए, मेरा नया बच्चा, भारत वर्ष का फ्यूचर। किसी ने बोला कि मुझे अगर लड़की होगी तो झांसी की रानी चाहिए। किसी ने बोला कि अगर मुझे लड़की होती तो इंदिरा गांधी होनी चाहिए। किसी ने बोला कि अगर मेरे को लड़का होता है तो नेहरू होना चाहिए। किसी ने बोला अगर मेरे को लड़का होता है तो महेंद्र सिंह धोनी होना चाहिए। ऐसे ऑन एंड ऑन एंड ऑन चल रहा था। तो वहाँ एक प्रभु जी का एजेंट आएगा ना, बोला कि बहन चौथ क्या हो रहा है, इतने लोग बात कर रहे हैं, कोई साला बहन चौथ भगवान का नाम लेता नहीं कि मेरा लड़का कृष्ण के जैसा पैदा होए, या मेरा लड़का राम के जैसा पैदा होए, या मेरा लड़की सीता के जैसी पैदी होए। चोदने के बाद लीगल मैरिज है ये।
वो जो मोसाद का एजेंट था, CIA का एजेंट घूम रहा है, भगवान का एजेंट था। बोला बहन उसने फोन किया भगवान को। अरे यार बहन चौथ, तुम्हारी तो लौड़े लगने वाली है। भगवान ने बोला अरे क्या चूतिया, क्या बात कर रहा है तू। अरे बोलता है बहन चौथ, तुम इन लोगों को चुदाए जा रहे हो, लंड खड़े होते हैं उनके और चूत भी औरत, शादी भी कराते हो, सब तुम्हारा नाम लेते हैं शादी के टाइम पे, चूदने के टाइम पे तुम्हारा कोई नाम नहीं लेता है। और हमने ये इन्वेस्टिगेशन किया, ये सवाल जवाब पूछे तो कोई ऐसा नहीं चाहता है कि उसका लड़का कृष्ण हो। वो लोग बोलते हैं कि हमको तो नेहरू या मोदी या फेंकू, कैनेडी, अमिताभ बच्चन, धोनी, फलाना फलाना चाहिए। कोई नहीं बोलता है कि मुझे कृष्ण चाहिए, राम चाहिए, शंकर चाहिए, या अल्लाह चाहिए भोसड़ी का, या जीसू बाबा चाहिए। मुसलमान लोग भी बोलते हैं कि हमको सलमान खान चाहिए। कोई ऐसा नहीं बोलता है कि अल्लाह चाहिए चोदने के बाद। तो मेरे को ये जो फोन किया था ये एजेंट ने, भगवान को बोला भोसड़ी गए अब यार। और ये एजेंट भगवान के लोग हैं, वो कुछ भी बोल सकते, जैसे मैं तुमसे कोई भी गाली बोल सकता हूँ वैसे वो लोग गाली बोल सकते। भोसड़े में गया, वो बोले क्या रे बहन चोदी है तुम लोग, कुछ भगवान का फिलोसफी बदलो। तो भगवान ने बोला अरे माँ की चूत, ये तो बड़ा बहन चोत प्रॉब्लम है यार। बोला हाँ देख 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 भोसड़ी के, स- सृजन कुमार उसका नाम था, एजेंट का नाम। भगवान ने बोला सृजन कुमार अभी तू चूतिए चुप हो जा, मैं अल्लाह से बात करता हूँ, कृष्ण जीसू से बात करता हूँ, जरतुष्ट्र से बात करता हूँ, और कुछ। तो भगवान ने पहले अल्लाह को फ़ोन किया, फिर जीसस को फ़ोन किया, ट्रस्ट को फ़ोन किया, फिर वो लोगों ने सोचा चलो कॉन्फ्रेंस कॉल कर लेते। सब मिलजुल के बात करने हुए सब लोग ने बोला कि यार तुम बहनचो क्या करते हो। सो जब भगवान ने ये बात रखी दूसरे भगवान लोग के साथ, अल्लाह अल्लाह बहन चौथ, तो सबने पहले भगवान के ऐसा बोले तुम्हारा क्या चक्कर है रे बहन चौथ, तुम्हारे आदमी लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये तुमको सोचना चाहिए। भगवान बोलता है अरे भोसड़ी है, स्टेटिस्टिक्स का रिजल्ट मैंने तुमको बताया नहीं अभी। अल्लाह के भी जितने भक्त हैं, जितने मुस्लिम मादर चौथ लोग हैं जो चोदते हैं, राइट, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी औरत को, छठी भी हो सकती, वो भी चोदते टाइम मर्द और हस्बैंड औरत दोनों नहीं बोलते कि हमको अल्लाह चाहिए। दोनों कुछ भी बात करते, बोलते हैं कि हमको परवेज चाहिए, मुशर्रफ या इमरान खान चाहिए, या सलमान खान चाहिए, या सिमिलरली सेम थिंग विद जीसस एंड जरथुस्त्र। कोई जरथुस्त्र ऐसा नहीं बोलता है कि हमको जरथुस्त्र चाहिए चोदने के बाद। हम वो बोलते हमको टाटा बोमन ईरानी चाहिए, बहुत लोग का ये रिक्वेस्ट है। तो सब भगवान लोग थे जो हैरान हो गए, अरे बोला माता चोद, हम लोग तो बड़ा माँ के लवड़े गलत कर रहे हैं बहन चोद। सबसे पहले अल्लाह ने ऐसा बोला कि माँ का भोसड़ा रे, तुम लोग बहनचो पता नहीं है कि हम लोग हमेशा बहुत वायलेंट है और हमको जो करना है वो करना चाहिए। ये चूतिया लोग चोदने चोदने की बात करते हैं ना सब। हम लोग को बहन चोद कल से
सबको बोलना चाहिए कि चोदना गलत है, तो इमीडिएटली भगवान बोला रहे भोसड़ी के चोदना गलत है, तू बोल देगा, लेकिन फिर आदमी लोग रंडी को चोदेंगे, माँ को चोदेंगे, बहन को चोदेंगे, बच्चे तो भोसड़ी के पैदा हो गए ही, और ये चोदते सब। कोई भी माँ हो या बहन हो या कोई भी हो, चोदते समय ये लोग यही सोचते हैं कि हमको कृष्ण नहीं चाहिए, कृष्ण की नाम ही नहीं आता है, अल्लाह का नाम ही नहीं आता है, जीसस का नाम ही नहीं आता है। सब लोग बोलते हैं कि हमको फलाना फलाना धोनी चाहिए। तो बड़ी समस्या लेके मैं नीचे आया खाने खाने के टाइम पे। मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मुझे कोई रिएक्शन देता नहीं है, कोई मेरे ब्लॉग के ऊपर कमेंट नहीं करता है, और मुझे ऐसा ही रखना है। मुझे कोई कमेंट नहीं चाहिए इसके बारे में। मैं सिर्फ कोई कमेंट नहीं मिले, मुझे आपकी वाइब्स आएगी मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं चौथे टाइम हमेशा ये सोचता हूँ, आज भी 1 महीने में 1 बार या 2 महीने, जब भी लौड़ी मेरे को बोलती है कि चोदना पड़े, चोदो, परमिशन लेनी पड़ती है अमेरिका में। बेंचो तुम्हारे इंडिया में भी ये परमिशन का चक्कर आएगा। फेंकू बेंचो, जसोदा बहन ने बोला कि तुम मुठिया मारो, जसोदा बहन ने बोला तुम मुठिया मारो। मोदी बोलता है मुठिया मारने से बच्चा पैदा नहीं होता है। मेरा वजूद मिट जाएगा। जसोदा बहन बोला तुम दिल्ली से मुठिया मारो, प्लेन से भेज दो, मैं ऐसी मेरी चूत में डाल दूंगी। डोंट वरी अबाउट इट। ऐसा अपने को कुछ करना नहीं है। अपने को सिर्फ ये चाहिए कि आप कल से, आज से, अभी से, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, लौड़ा लहसुन, जड़त्रोष्ट्र हो, बोमन ईरानी, आप जब चोदो तो ये मत सोचो कि तुम्हारी औलाद अमिताभ बच्चन होगी। सिर्फ ये सोचो कि तुम्हारी औलाद, अगर तुम हिंदू हो तो ये सोचो कि वो राम बने, कृष्ण बने, तो मुस्लिम हो तो अल्लाह बने, या अमीर, हलाकू, कौन मादर चौथ सब थे उनके। क्रिश्चियन हो तो जॉन, लौड़ा लहसुन, गांड, तिरिशा। मैं और आप साथ मिलकर एक प्रण लेते हैं कि चौदहते टाइम हम सब ये सोचेंगे कि हमारे जो सबसे ऊपर वाले लौड़े लहसुन है, अल्लाह, भगवान, जीसस, हम चौदे तब जो निकले बाहर, हमारी औरत या हमारी रंडी की चूत से, वो अमिताभ बच्चन नहीं चाहिए हमको, हमको सलमान खान नहीं चाहिए, हमको इंसान चाहिए, एक भगवान चाहिए, एक अल्लू चाहिए, एक कुश्चू चाहिए। बेंचोद। अभी मैं ब्रेक लेता हूँ।